Okay, my voice is fine to all, right? Good evening, everyone. So, welcome to StudyIQ live session of MCQ discussion as usual, and this would be the as usual. This session will be climatology over MCQ हम किसी देखिबा, and because हमें already देखी दीचे काफी, तो this would be the fourth, that is the MCQ for the what climate. तो हमारा fourth वाला नहीं किया सिबा में, ठीक है? जियोग्राफी रो फोर्थ सेशन दैट वुड बी द क्वेश्चन जोटा रहबा आपनकर क्लाइमेट ऊपर बेस करिवो. गुड इवनिंग सुजाता, सुनीता, एवरीवन. बाकी मन को कहि दियो कि जॉइन कर देबे सो दैट तांको जणाई देई थाओ एंड शेयर इट सो दैट व्हाट अदर वुड बी एबल टू जॉइन. Share it fast, right? Just a minute, huh? Yes. So the first question before you. The first question climatology ऊपर आज जहाँ भी तमर क्वेश्चन रहबे ना, it would be based on climatology, right? हटिके देखिबा तमन को कमेंट कोन आसी. Yes. as usual मो कमेंट पढ़े समस्तंकर. गुड इवनिंग समीर, शत्रु, स्पंदन, सुजाता, एवरीवन. ओके. हाँ, तो क्वेश्चंस कौन? India is concerned about the potential impact of the Chinese mega dams being built on on a sad river. Which of the following could be incorrect? That is correct. Sorry. Correct कौन को? Answer कौन? What will be the correct one? मतलब impact कौन पड़िबो? Largely में देखिए. Rekha also joining me, Sasmita also joining me. Now, the Chinese dam could reduce the dry season water flow to India by 85%. And respond, India is also fast tracking construction of own upper dam karuche Siak multipurpose. This one is correct. The proposed India's dam has widespread support among the local communities. This is also correct. Eta bhi correct. Right. But हाँ 85% जदि हमें देखिबा कना ये तमरो न्यूज रे थिला करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन जोटा समस्त आंसर देइछंती ए. दैट मींस ओनली 1 and 2 इज करेक्ट. बट 1 and 2 इज करेक्ट तो नो कना एटा जो प्रपोज्ड है एटा सपोर्ट भी करूछंती लोकल लोक तो सपोर्ट करूछ. जदि हमें पेपर देखिबा बेस्ड करकी मो भी देखिनी आंसर कोन एक्चुअली व्हाट इज आंसर देयर. Forget about the answer. But the local peoples they are supporting, right? The local people is what supporting to this project. हाँ ये 85% that will reduce I think only 1 and 2 are correct. But local लोग तो support करूछंती. Answer जदियो 1 and 2 देइची, but the local people has widespread support. हाँ ये तो मैं कहि पारे, but somehow the local people also supporting. अच्छा widespread को नहीं कि भूल ही जीवो कहूछ कि बाकी ये तो ठीक अछि कारण हमर जो monsoon during the winter monsoon season रे हम जति देखिबा largely the water Indian side रो आसे अरुणाचल प्रदेश रे. dry season रे जोटा कि हमर melting glacier सेही टाइम पे प्रॉब्लम हुए, बट लोकल लोक माने सपोर्ट करूछ. देखो ये वाइड स्प्रेड को जदि एई वाटा में देखिबा सेथि पे भूल हेइ थे पारे. हाँ ड्राई सीजन ठीक अछि.
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी ये ऑप्शन गुड़ा अच्छी तो आंसर मुझे ओके जानी पारे ठीक अच्छे नाउ क्लाउड सीडिंग हैज बीन इन न्यूज इन इंडिया as of May 2025. Which of the following is true regarding the deployment? It is being used in Rajasthan to reduce the rainfall during the drought induced, sorry. It is universally accepted as an effective and risk free solution. Na. It involves a disperse of substance like silver iodines into the clouds. এটা তো হিত আমি জানছে তাহলে কো आंसर लोकल कम्युनिटी सपोर्ट करूची से मुझे कहली नहीं आंसरटा लोकल कम्युनिटी सपोर्ट करूची जदिव आंसर की रे दिया ही 1 and 2 बट जदि तुम या देखो पेपर पढ़ो जदि लोकल कम्युनिटी सपोर्ट करूची हाँ वाइड स्प्रेड दैट कुड बी ए रॉन्ग आम कह बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल इज सपोर्टिंग ये जो डैमटा होची बा जोटा में ब्रह्मपुत्र ऊपर वी आर डूइंग द डैम्स इन द अपर सियाक रिवर दैट इज सपोर्टेड बाय द लोकल कम्युनिटीज से मुझे कहनी आंसर सो दैट विल डिफर लिटिल बिट राइट 2 नंबर डी अच्छा या द्वारा देख बी तो हम ना कहीं दुबई रे देखीचे दुबई केस जदि नहीं जो रिस्क फ्री लिखाई ना ना दिस इज नॉट रिस्क फ्री बिकज क्लाइमेट चेंज कर प्लस दुबई रे जो फ्लड होता मन पकाओ दुबई फ्लड दैट वाज व्हाट बिकज ऑफ दिस एथर कौन सिल्वर एंड पोटासियम नेक्स्ट आस व्हाट डज द क्लाइमेट वी प्लस कॉन्सेप्ट रेफर टू व्हाट एटा मु 5-6 थर मु डिस्कस करिछि ये आंसर समस्त ठीक करबा दरकार बहुत थर डिस्कस करिछि मु गुड इवनिंग एवरीवन राजेंद्र एवरीवन राइट आज यूजुअल समस्त तो आसचंती जो माने आसंती पोटासियम आयोडाइड भी यूज करि परबो खाली सिल्वर नहीं क्लाइमेट वी प्लस कौन द रैपिड ओसिलेशन बिटवीन द एक्सट्रीम ड्राई एंड वेट कंडीशन राइट क्लाइमेट वी प्लस कोठी अधिक देखा जाउची साउथ ईस्ट एशियन सिटीज मानकरे हाँ ये क्वेश्चन आगुर मध्य हमें करिछि मैनी पॉपुलेटेड सिटीज स्पेशली इन इंडिया रे देखा जिवो वेटर एंड एक्सट्रीम जेमती भुवनेश्वर रे भाबो एक्सट्रीम रेनफॉल होची एक्सट्रीम हम कहबा ड्राइनेस मध्य आसुची हीट नेक्स्ट इंडियाज भारत फोरकास्ट सिस्टम एटा हम देखिथिले राइट को मिनिस्ट्री अंडर आसुची नहीं सब क्वेश्चन आसीबो गुड इवनिंग अनीता ये तो देखि परबो दैट मींस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हम देखिबा एडो ठीक अछि हां फोरकास्ट मॉनसून साइक्लोन्स ये मध्य हम देखिथिले बहुत बढ़िया आको मध्य आगुरु करिछि हमें कारण ये सब जेहेतु लेटेस्ट क्वेश्चन गुडा पढ़िबो हां जोडा तमे कहउछो कि जदि पेड क्लास रहउछि ना देन डू द पेड क्लास किछि असुविधा नै नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा
बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ट्राई करो। फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर है। According to the recent research, how is the onset of monsoon India revised from traditional understanding? एटा मु डिस्कस करिछि। ओनली जो मैंने करेंट अफेयर पढ़ुछ से कहि परिबो। ये चारटा ही ऑप्शन, चारटा ही ऑप्शन ताले कोन, इट इज नाउ अपे स्टार्ट्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एंड प्रोपागेट नॉर्थ एंड वेस्ट। आगुर मॉनसून कोन होतला, एक मिनट, दैट मीन्स यदि हमें देखिबा ए न्यू मॉडलिंग जोटा हम देखाउची, आगुर कोन होतला कि जो मॉनसून स्टार्ट होतला हमर केरला रु साधारणतः मॉनसून स्टार्ट हुए कोठु, केरला रु साधारणतः मॉनसून टा केरला ही कि आसे। वर्तमान देखा जाउची कि नॉर्थ ईस्ट रे मॉनसून एंट्री करूची नॉर्थ होई कि नॉर्थ वेस्ट को जाउची, एंड दिस ट्रेडिशन जेहेतु दैट मीन्स तमे कहबा बिहार, यूपी, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, दैट दिस रीजन विल रिसीव मोर रेनफॉल। एटी कोन बहुत सारा रेनफॉल रिसीव करिवे, एंड दिस इज व्हाट, ये बहुत इंपोर्टेंट एंड लेटेस्ट। हाँ काली रो मॉनसून रे ये देखो एबे लेटेस्ट क्वेश्चन ये पूरा, एंड ए मु कहिबी ये 2-4 दिन है न्यूज रे आसुची, आ मु भी मध्य कहिची पिला, शायद मु भी कहिथिबी, एमते ना कि मु कहि नथिबी, राइट, मु तो कुहे सबले प्राय, ठीक अछि कि तमरो एटा देखा जिवो। एक मिनिट यार, एटा ना, एक मिनिट, एक मिनिट, हाँ 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन ना, ये जदि तमे देखिबो ना दिस क्वेश्चन, राइट, तो एटा कोन ट्रेडिशनल, एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन केन तुम पचारि पारे। ट्रेडिशनली हमर जो मॉनसून कोठु आसे, द मॉनसून कम्स लाइक दिस, मॉनसून साधारणतः एमिति आसे, बट नाउ मॉनसून इज कमिंग लाइक दिस, द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एठी एंटर करूची मॉनसून, देन मॉनसून इज कमिंग लाइक दिस, एंड अनदर ब्रांच एटा होची फास्ट एंट्री करूची, देन सेकंड इन केरला, आउ गोटे ब्रांच जोटा अरेबियन ब्रांच टा केरला रे एंट्री मारूची। तो फास्ट दिस वन, आगे हमें पढ़ी केरला रे आगे मॉनसून आसे ना, एबे मॉनसून आगे स्टार्ट होची कोठी नॉर्थ ईस्ट रू, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। तो येटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा समस्त देखुथिबो। हां ये नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, according to the 2025 reports by the Centers of Science and Environment, which of the following statements are true about the India's environments and developmental trends? 2024 is the India's warmest years on record. Extreme weather events occurs by 88% on day in 2028. These events displace over 5 million people, especially in Assam. These are current affair based question. Huh? Just a minute. ए जीवो आंसर मिलला। ओके जीवा देखिबा आंसर कोन।
देखो डेटा एंड फैक्ट्स रहिले ऑब्वियसली जदि देखो जो न्यू डेटा दिया हिची देन गो फॉर द ऑल राइट गुड इवनिंग लिटिल इफ इट इज न्यू डेटा देखो यार नहले ये सब डेटा किए करिवो जैसे तमे हो कि मु हुए दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एटा किसी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नुह कि माने कौन सी लोक ठीक कर देबो तो देखो ये जमती ये गोटे डेटा दिखाई गोटे डेटा दिखाई बट दिस डेटाज आर पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टू डू द आंसर बट हाँ तमें कहीं कहब ऑल ऑफ द एबव हम बिकॉज दिस इज न्यू डेटा बिकॉज दिस इज व्हाट न्यू डेटा दिस वन इज न्यू डेटा लेटेस्ट डेटा 2024 रो दैट इज व्हाई वी कैन गो फॉर द अप्लाई वन ए न्यूज रे थिला सो 2024 वाज वार्मेस्ट ईयर एटा तो हमें समस्ते जानिछे वार्मेस्ट ईयर एंड 88% डेज हमर एक्सट्रीम रही तो याकू जदि तुम मन रखिबो यू कैन यूज इट इन द मेन्स आंसर मध्ये तुम डेटा को यूज कर परिबो ताले वार्मेस्ट ईयर हैला 88% डेज रे हमर रही एंड 5 मिलियन पीपल्स आसाम रे फ्लड हे कि डिस्प्लेस हे चंती 7 नंबर क्वेश्चन at the international conference in Dushanbe May and June 2025 which of the following were highlighted by India as a measure to combat the glacier retreat हाँ थर्ड स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली कंफ्यूजन थिला बाकी देखो ये सब ना इंपोर्टेंस बहुत ही इंपोर्टेंस खाली इंपोर्टेंस नो दिस क्वेश्चंस आर इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन नो ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन अछि एंड द लेटेस्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू डू द आंसर राइट बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग जोटा मो तुमको कहली को दिस आर थिंग्स आर डिफिकल्ट बट यू हैव टू गो फॉर दैट तुमको तो जीवा पड़ो इट्स नो अदर वे 7 number 2025 is declared as the international amicable years of the glacial preservation Manoranjan Kochi all Kamlakant B Shikha B Anita B Samir B D is my lifestyle Sanu Prasad Meher is going for the B Sasmita D Sujata Satru all is going for the all so obviously it would be 1 and 2 this is what ए जो 2025 years रो कोन कहितली कालीबा कहितली बीट द प्लास्टिक एटा कालीबा तमे पढिथलो निजे बीट द प्लास्टिक काली पढि नथलो हां शत्रु काली पढि नथले कि लंच इंटरनेशनल इयर्स बीट द प्लास्टिक में पढि नथले सो एटा हबो नाही राइट ताले आंसर देखि दियो सो आंसर कोन देखिए इंडिया इनिशिएट्स जोटा करछि इनिशिएटिव्स फॉर द न्यू सेंटर्स फॉर द क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट चेंज स्टडीज इट्स एड्रेस्ड टू द दुसान्बे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ग्लेशियर प्रिजर्वेशंस है ना बाकी एटा हमें कहबा कोन नॉट लॉन्च इन इंडिया अच्छा एठी टिके देखि दियो इट्स नॉट लॉन्च इन इंडिया किंतु एटा ताले दीटा आसुची अच्छा मोते टे करेक्ट करो मु भी कंफ्यूजिंग ए इंटरनेशनल ईयर एटा भी डिक्लेयर हेची ताले तो दीटा हे जीवो ताले तमरो 2025 बीट द ग्लेशियर भी हबो और सॉरी बीट द प्लास्टिक एंड इंटरनेशनल ईयर्स बट अच्छा इंडिया रे हेनी एती मन रखे पड़े अच्छा ठीक अछि मु कहली यार ताले 2025 दीटा थीम गोटे हला बीट द प्लास्टिक आ गोटे हला तमरो इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ ग्लेशियल प्रिजर्वेशन किंतु 2021 रु नेकी 2021 रु नेकी 2030 टा को जो ए जो डेकेड जो हमें कहै डेकेड इज कॉल्ड एज व्हाट प्रिजर्वेशन ऑफ वेटलैंड एंड ये सब को कहउछि एनवायरमेंटल डे रे थीम थिला नॉट बाय इंडिया ओके ठीक अछि डन डन ओके हां ये फैक्चुअल जिंस रहिबो फैक्चुअल जिंस गुडा तो कांसेप्ट हेले ना फैक्चुअल जिंस तो रहिबो ठीक देख Which of the following statements are correct regarding the recent changes in the glacier extent in अरुणाचल प्रदेश कारण आम देखी अरुणाचल प्रदेश रे बहुत सारा ग्लेशियर खत्म होती पढ़ी थे समस्त पढ़ी भी थी करेन्ट अफेयर जमती कि लेना ग्लेशियर थी आम जाचे कौटी थी आमर हाँ ये देख अरुणाचल प्रदेश रे जो ग्लेशियर टा आमर कमी केते कमी
the changes is vanishing 110 glaciers between 19 एटा ठीक अछि the total glacier declining from एतिकी to एतिकी देखो ए मु भी कंफ्यूजिंग रे अछि but this statement is correct एटा मोर मन अछि कि मु भी करंट अफेयर पढिथिली this one is correct तो बट आउ गोटे थिला तमरो लेना ग्लेशियर जोटा नेपाल रे सेटा खत्म हो गेला तणु देखो एबे ना टोटल जदी हला ये एरिया मु कहि ना नुआ डेटा माने चलो बाकी देखो ये सब क्वेश्चन को सॉल्व जे भी कले डिफिकल्ट हबो काना तुमको डेटा तो मन रहिबोनी कहार डेटा मन रहबो कि 585 स्क्वायर किलोमीटर बा किलोमीटर जदी स्क्वायर किलोमीटर टू 310 स्क्वायर किलोमीटर कार मन रहबो को तेणु हमें ऑल नहीं जबा बस गो फॉर ऑल गो फॉर ऑल बस जा हबो एई बेला क्वेश्चन को सॉल्व करियो जेतरो ना बोथ मार दबो आउ किछि हेई परिबोनी because you can't remember this data this one एठी जदी 89 कर दबो कोन करिवो तमे भूल हे जबो कि नहीं 89 हे गेले भूल हे जबो 2005 हे गेले भूल हे जबो लेना ना याला अच्छा याला ग्लेशियर ओके शत्रु ठीक अछि करेक्ट याला ग्लेशियर ना नेपाल रो जोटा डेड हे गेला याला ओके थैंक यू सस्मिता भी कहूँ याला ग्लेशियर जोटा नेपाल रो डेड ही जाइछि सेति पे न्यूज रे थिला तो या को टिके देखि तो एई भले क्वेश्चन आसेला ना किछि करि परिबोनी ताकू तमे जदी डेटा मने अछि करिवो नले इधर छाड़ दबो नले ताकू बोथ करिवो कोन अछि ऑल द एबव करिवो नेक्स्ट which of the following statements are true regarding two well known glaciers in the Himalayas region that is Drang Drung Glacier Ladakh and Yala Glacier Nepal's. The Drang Drung Glacier is receding at approximately 1 meter per year and during a symbolic glacier that is the funerals the Yala glaciers was commemorated as the dead due to its rapid disappearance with the memorials unveiled in 2025. सेतिबे मु एमती किछि क्वेश्चन नै छी देख याकू भी कोन करि परिबो जोटा हमें एबे कहतले याला ग्लेशियर एटा डेड हेछि हमें देखिले दिस इज व्हाट सेतिबे ग्लेशियर फ्यूनरल्स हमें कहिबा सिंबॉलिक फ्यूनरल्स अर्थात कोन मतलब खत्म अच्छा ये 1 मीटर कि 2 मीटर किछि करि हबो कि किछि तमे करि परिबो गो फॉर बोथ 1 मीटर जगह एठी 2 मीटर हे जबो जदी 1.5 हे जबो जदी ए जदी ईयर चेंज हे जबो देन गो फॉर बोथ एंड सी द आंसर व्हाट हैपेंस go for both and answer is also coming the correct तेणु एई भले क्वेश्चंस को जोठी फैक्चुअल्स रहउची these are question what factual question एडी कांसेप्ट रो किछि जागा नहीं there is no place of the concept only you have to guess the questions on the basis of what factuals datas do it if it मतलब it may favor may not favor जदि मु एई भले 10 टा क्वेश्चन करूची तमे ध्यान से मन रखो जो मैंने आगु को ओपीएससी प्रीलिम्स देउछ एई भले क्वेश्चन छाड़िबो नाही व्हाट विल हैपन सी जदि हमें 10 टा क्वेश्चन अछि एटलीस्ट 5 तमे जदि करूछ 10 टा जको 6 टा तो क्वेश्चन 5 टा तो ठीक हो 6 टा तो ठीक हो बस तमे बेनिफिट रहइबो यू विल बी इन द पॉजिटिव साइड देन व्हाई टू लेट दिस क्वेश्चंस डू दिस क्वेश्चंस डोंट लेट देम गो ओके ए भले क्वेश्चन को छाड़िबो नाही बट हां देख यार गोटे टेक्निक मु तुमको सिखाऊची जोटा समस्ते इंपोर्टेंट अब मन रख तुमको सर ए भले क्वेश्चन ताले भूल हबोनी ना भूल हबो जदी मु भाबो मु एटा तो लेटेस्ट डेटा मु कहिची लेटेस्ट डेटा केबे से माने चेंज करिवे नाही बहुत कम चेंज करिवे किंतु जति ओल्ड डेटा भाबो मु गोटे जनधन योजना ऊपर एमती गोटे डेटा देखि क्वेश्चन बनाइबी तो सेठी मु डेटा चेंज करिवार प्रोबेबिलिटी अधिक अछि कारण सेटा पुराना मु चाहे समस्ते पढी थिबे आई होप के दैट इज गन थ्रू बाय एवरीवन बट व्हेन इट कम्स टू लेटेस्ट डेटा as the peoples are already not acquainted with this data so don't be confuse them put it simples correct so that is the techniques that you have to go through. Now we will have oceanography or this one. Go for the questions. A statements, here is the key.
नंबरिंग टिके एपट सेपट हो जाइए. It is associated with the अच्छा एटा देखो questions देखो एलिनो. Question is what एलिनो, sorry question is what एलिनो. एलिनो तो समस्ते पढ़ुच आ कौन कहबे एबे कांसेप्ट आसीगला तुमरो ए फैक्चुअल नहीं. एलिनो कोटा ठीक आ भीतर देख काली बोधे करथिले काल ना परदिन आंसर इजीली करि परिबो एटा. अच्छा एटा सस्मिता कोची ड्रामा जो ड्रूम ग्लेशियर इज ओरिजिनेटेड एज द ट्रिब्यूटरी ऑफ जास्कर. बहुत बढ़िया, थैंक यू. वो समझते एवरीवन डन. इजी अच्छी देख विथ रेफरेंस टू द ओशन करेंट. काली मु कही क्रोशियो कथा कैनेरी कथा कही बस आघुलास कही नथली. बस देख काली तुम डिस्कस करते ना क्रोशियो करेंट जापान करेंट कह जाए कैनेरी काली देखी तुमको. बस एबे तुमको देखीदेव टिके ध्यान से करिवो नले भूल भाल हो. इजी क्वेश्चन भाविकी बेसी तरबर होनी है. खाली आम क्रोशियो ओयासियो एसबू कहून मोजाम्बिक कथा कही आगुलास रहा देन तुम साउथ आफ्रिका पाखे जोटा रहा कौन बेंगुला करेंट कथा डिस्कस करते. देन डाइविस जो स्ट्रेट पाखे अच्छी तुम कौन कोल्ड करेंट जोटा से देखी लैब्राडोर कोल्ड करेंट कथा देखी. 2 नंबर डी कहूँ किए शत्रु कहूँ डी, शिखा कहूँ डी, अनीता कहूँ ए, सुजाता ऑल, सस्मिता राइट. एबे देख माय लाइफस्टाइल डी डी डी. ए को माने कहूची ए को माने कहूची ए को माने कहूची दोज हु आर ए दे आर द करेक्ट आंसर. व्हाट ए इज द करेक्ट आंसर. दिस इज नॉट साउथ अटलांटिक, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक. दिस वन व्हाट कैनेरी करेंट कोठी देखा जाए नॉर्थ अटलांटिक रे देखा जाए. काली कहि नथली ड्रॉ कर नथली काली अफ्रीका मैप जो तुम आफ्रिका मैप मु ड्रॉ करी आफ्रिका मैप. तो ये आफ्रिका मैप पाखे ये मुझे देखी कैनेरी करेंट एटा इक्वेटर ताले ये कौन कैनेरी तो इक्वेटर नॉर्थ रे आसबनी केमती तुम छोटो मिस्टेक देख स्मॉल मिस्टेक वेरी माइन्यूट मिस्टेक तुम आंसर को खराब करदेला. गोटे भल क्वेश्चन तुम हाथ पलैला राइट. तेणु करके जोटा इजी क्वेश्चन रहिबो से इजी नुह इट्स ए ट्रिकी वन. इट्स नॉट इज ए इजी बट ट्रिकी वन राइट. इट्स ए इजी बट ट्रिकी वन. तेणु ये क्वेश्चन भूल रे भूल करनी ताकू ध्यान से पढ़ो ना तुमको बाधिब बहुत बाधिब. तुमको लगे यार मु क्वेश्चन आंसर जानी भूल कर दे पड़े आसली एंड दैट हैपेंस. राइट देख छोटो मिस्टेक रे भूल हो गला आउ एमती सिली मिस्टेक हुए सेटा खाली तुम द्वारा ना इवन आई ऑल्सो डू मु भी मिस्टेक करे बट वी कैन मिनिमाइज इट. से तो कह प्रैक्टिस कर. व्हाई
so that this kind of small mistake we can minimize in the exam. जो माने MCQ सेशन देखु नाहंती बा निजे MCQ करू नाहंती तो से एमिति कौन कहले छोट छोट मिस्टेक भाबो एई भले गोटे जदी तबे ठीक कर दबो 2 मार्क बढ़ी गला 2.5 मार्क बढ़िबो कारण आउ गोटे माइनस रु भी तो बंची गलो ना तमे एईटा जे भूल करिवो तार 2 मार्क जीवो पुनी माइनस 0.3 मार्क जीवो आउ जे ठीक कला से केते गेन कला तेणु गोटे छोट छोट मिस्टेक को हमकू आगु को नहीं कि कौन आमको आगु को बढ़िबारे रोकिबो तेणु तमे कौन करिवो एताकू रिवाइज करो रिपीट करो प्रैक्टिस करो से अपने आप ठीक है जो देखो थर्मो हालाइन सर्कुलेशन इजी क्वेश्चन तीन नंबर yes everybody is given right answer समस्ते right answer देइस ताले जदि हम कहबा everybody is given right one yes the thermo that means हमें जोटा thermo halines अर्थात temperature plus salinity that means what thermo means temperature haline means salinity both तो ये कोठी देखा जबो this is in this layer what from that means I would say it would be 200 to 500 meter. Generally this is the thermocline zone. This one is what thermocline zone. In this thermocline zone, right here it happens. So that is why difference in salinity and temperature of the sea water. So yes, answer will be there. It's a global conveyor belt भी ताकू कहाजे कौन कहाजे global conveyor belt and ये belt बहुत important करना ओशन सर्कुलेशन रे हेल्प करी थाए. Next, consider the following statements about the Indian Ocean dipoles. The positive Indian Ocean dipoles are characterized by the warm waters in the Western Indian Ocean near the Africa and the cool water near Indonesia. As a positive Indian Ocean dipole generally strengthens the Indian monsoon, the Indian Ocean dipole is independent of El Nino and has no teleconnection. देखो आंसर फोर नंबर हाँ 4 number एक होची शत्रु 1 and 2 सुजाता शुभकांत सैनी ए अनीता ए एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर ए अच्छा देखो इंडियन ओशन डाइपोल्स जदि आम देखा ड्र करके आज ही शायद मु क्लास रे पढ़ौथि आज इंडियन ओशन डाइपोल्स सो इंडियन ओशन डाइपोल्स इज अ व्हाट सी सरफेस टेम्परेचर फेनोमेनन लेट्स से एठी रही तमरा अफ्रीका दिस साइड इज अफ्रीका दिस साइड इज इंडिया इंडोनेशिया इफ एठी जदि वार्म वाटर अछि then it is positive phase. If the here is cool water, then it would be negative. The negative positive is depends upon the temperature. So that is why this one is correct. This one is correct. But से कुछ no connections with El Nino. देखो no doubt independently ये काम करे. ये कौन independently काम करे but no टा कोट ना कोठी extreme ही जाओनी. No टा but extreme होची and that is why हमें ताकू कहबा कि what extremely हमें नबा नहीं. So it interacts with the El Nino Southern Ocean Ocean not fully independent, fully no, partially independent. जदि एठी लिखा ही थांता
partially independent, has little connection, ताले तमे करता था. But ये जो note है ना extreme है ये ला. Indian Ocean dipole समझते जानी चाहिए तो सी सरफेस टेम्परेचर बा सी सरफेस टेम्परेचर ओसिलेशन अर्थात जेतल तमरो सोमालिया कोस्ट पाखरे वार्म वाटर रहबो दैट वुड बी पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल व्हेन इट वुड बी द क्लोज टू द इंडोनेशिया दैट वुड बी नेगेटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल्स राइट डन ठीक अछि नेक्स्ट जीवा में India launched the Samudrian mission as the part of deep that is Indian Ocean mission. Which of the following is correct about? फाइव नंबर मासे 6000 समझते जानी छो बस हेई जीवो इट्स एम्स टुवर्ड्स सेंड द ह्यूमंस आको हमें कोन कहितली मु से दिन कहितली एक्वानॉट दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट एक्वानॉट जेमती तमे स्पेस को गले हमें कहूचे कोन कोन कहूचे स्पेस को जो बने जाउ छंती एस्ट्रोनॉट ताऊ कोन कहूचे एस्ट्रोनॉट आ जो बने समुद्र तळ को जीवो ताको कहआ जीवो एक्वानॉट दे वुड बी कॉल्ड एज व्हाट एक्वानॉट तो यस दे वुड बी कॉल्ड एज aquanaut कोन कहा जबो मत्स्य 6000 राइट ताऊ कोन कहा जबो aquanaut which of the following seas are considered as the marginal sea of Indian Ocean ये क्वेश्चन भी आगुरु करा हिची not NOT no NAUT aquanaut which of the following seas are considered as the marginal sea of Indian Ocean या आगुरु थरे में सॉल्व करथले हाँ एटा तमरो जो मत्स्य 6000 रही जोटा कि डीप सी एनवायरनमेंट को स्टडी करिबा पॉलीमेटालिक नोडुल्स है गला मिनरल्स है गला ये सब बहुत हमको हेल्प करिवो 6 नंबर यस अंडमान निकोबार मोजाम्बिक रेड सी टाइमर सुई मध्य जीवो यस बहुत बढ़िया आंसर समझते ग्रेट ग्रेट एवरीथिंग एटा हमें डिस्कस करते ऑल इज द आंसर राइट मार्जिनल सी बुझी परछो तो जेते छोट छोट मेन इंडियन ओशन को लागिची जो माने those water bodies that connects the Indian Ocean or the part of Indian Ocean would be called as the marginal sea of Indian Ocean. That means we are talking about Indian Ocean region IOR. Bay of Bengal is already Indian Ocean. Chalo. Bay of Bengal Arabian Sea is not marginal. They are not marginal. They are large. They are not marginal. Bay of Bengal Arabian Sea आसीबो नाही तमर गल्फ ऑफ पर्शियन आसीबो रेड सी आसीबो गल्फ एडेन आसीबो सी ऑफ एडेन आसीबो अंडमान सी आसीबो सेही गुडा आसीबो बट बे ऑफ बेंगल इज नॉट नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट एसोसिएटेड विथ मिड ओशियनिक रीच इज अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हाइड्रोथर्मल वेंट्स ब्लैक स्मोकर्स वोल्केनिक आइलैंड्स चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट
Which of the following feature is are associated with mid oceanic ridge? It's not a transform fault. They are what? Diversion. এটা কোন আমার দেখিবা এ আচ্ছা রুহ মতে কো এটি ভলকানিক আইল্যান্ডস দেখা যাই পারে হাইড্রোথর্মালস রহিব বাট দিস ইজ নট ট্রান্সফর্ম ফল্ট মিড ওশানিক রিজটা কোন হই থাকে ইটস এ ডাইভার্জন বাউন্ডারি মিড ওশানিক রিজ ইজ হোয়াট ডাইভার্জন ইটস নট ট্রান্সফর্ম ইটস নট ট্রান্সফর্ম বাট কেবে কেবে ট্রান্সফর্মস তো দেইছি এটি আনসার রে মাইট বি হেই পারে কেবে কেবে एमती ना कि हेई परिबनी केमती मु देखौछि एटा टिके मु जूम करि परलिनी शायद मोते केमती मु कहउछि देखो मु ड्रा करके देखै दउछि तो एटा जो दीटा जोठी मिसिबनी कि ट्रांसफॉर्म हेई जिवो तो ट्रांसफॉर्म भी देखा जिवो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखा जिवो सेटा आमी तो कहि परिबन काना बहुत बड़ पैसिफिक लेट्स से एटा पैसिफिक ओशन एमती जो रीचटा अछि एठु आउ गोटे रीच स्टार्ट हबो तो एई जो पॉइंटटा तमरो ट्रांसफॉर्म हेई जिवो राइट एटा पॉइंटटा रहला तो एठी ए आड़ को जाउची ए आड़ को जाउची तो एठी ट्रांसफॉर्म भी हेई जाई पारे राइट ठीक अछि एटा ट्रांसफॉर्म भी हेई जाई पारे ध्यान से देखिबो भाबो एटा तमर मिड ओशनिक रीच रहिछि तले ये तो एमती मूव करूची ये भी मूव करूची ये भी एमती मूव करूची बट आर भाबो बाउंड्रीटा एठी कट ऑफ ये एठी कट ऑफ तो एई जो लाइनटा रहबो एटा हबो तमर ट्रांसफॉर्म दैट वुड बी ट्रांसफॉर्म एटा तो ठीक अछि ये ठीक अछि राइट नेक्स्ट एटा छाड़ एटा हमें देखी छी आउत ए जो रिसेंटली जोटा ठीक अछि देखि दियो एटा डिस्कस हमें करी छी ऑलरेडी आउ थर देखि दियो all 8 Satru Kochi, all Sujata, all Sasmita, everybody is going for the all Subhokant, Kamla, Shikha, Subendu, Padhi, Anita, Kamla, Prakash, everybody is going. Obviously, it हमें देखिए कि भारत प्रकाश जो सॉरी फोरकास्ट सिस्टम रिसेंटली लॉन्च includes the ocean atmospheric coupling. एटा important ना आगो टिके मन रखि दो because you can add into the mains answer. ये सब को चाहिबो कि तमे केमती मेंस रे यूज करिया पे राइट try to use it in the mains कहना जते हमें ultimately mains रे हमें यूज न कले ना तो तार किछि वैल्यू ही नहीं तार किछि वैल्यू ही नहीं राइट so try to use it in the mains रे ताको यूज करिया पे ट्राई करो ठीक अछि तो आज एतिकी करंट आज एतिकी करंट अफेयर क्वेश्चन थिला कहना जेहेतु मु भी टिके व्यस्त रही जाइथिली आसी पारे लेट हो गला तेणु जहाँ भी हो तुम आज एतिकी आम करंट अफेयर डिस्कस करदे तो लगभग 13 14 15 क्वेश्चंस देखी आम बेसी देखी पारे राइट ठीक अच्छे ताठू अधिक देखी आम मोर देन दैट 20 लगभग क्वेश्चंस आम देखी राइट तो काली आउ टिके आम अधिक क्वेश्चंस आनिबा आज एतिकी रहिबो सेशन को आज एठी रखिबा ठीक अच्छे काली 1.5 आवर नेबी काली टिके लंबा सेशन नबा आम एंड 30 क्वेश्चंस सॉल्व करवा जमती आम येस्टरडे 30 क्वेश्चन सॉल्व करथिले सो वी विल हैव 30 क्वेश्चन टुमारो एंड एटलीस्ट 1.5 आवर सेशन रहिबो काली टुमारो सेशन तो आज सेशन को एठी रखिबा ओके थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट टू ऑल राइट पीडीएफ तुमको मु कहि ना मो टेलीग्राम चैनल रे मु पठै देबे प्लस स्टडी को टेलीग्राम चैनल रे भी मिल जिवो
StudyIQ Telegram channel रे भी मिली जिवो प्लस मोर Telegram channel रे भी मिली जिवो OS Mentor. Thank you, Sunita, for your kindness, and everyone as well. Thank you all, and good night to all. See you tomorrow. Take care.